सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने सोमवार को कानून में किए गए 3 बड़े बदलावों पर अंतिम फैसला आने तक स्टे लगा दिया है। इसमें वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का नियम शामिल है। सुप्रभात टाइम्स की विशेष रिपोर्ट। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आज वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर जो फैसला आया है वो बहुत अच्छा और बैलेंस फैसला है। गवर्नमेंट की मंशा भी यही थी कि वो संपत्तियां जो मुस्लिम समाज में दान के रूप में वक्फ की जाती हैं उसका मिसयूज ना होने पाए या दूसरे धर्म की संपत्तियों को जबरन गैर कानूनी तरीके से वक्फ संपत्ति घोषित न की जाए। इस वजह से वक्फ बोर्ड जो एक खाली मुसलमानों की जमात थी उसमें गैर मुसलमानों को सदस्य के रूप में एंट्री देने के लिए जो प्राविधान था उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है। यानी कि अब वक्फ बोर्ड खाली मुसलमानों की जमात बन के नहीं रह जाएगा, उसके अंदर गैर मुसलमान भी रहेंगे ताकि वो ये देखते रहें कि वक्फ संपत्तियों का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है या गैर मुसलमानों की संपत्तियां वक्फ में जबरन दर्ज तो नहीं की जा रही हैं। मुख्य कार्यपालक अधिकारी के संबंध में भी जो फैसला आया है कि वो भी गैर मुसलमान हो सकता है, ये बहुत अच्छा फैसला है। कम से कम उन कट्टरपंथी संगठनों के और कट्टरपंथी मुल्लाओं की जो मोनोपोली थी वक्फ बोर्डों पर, अब लगता है कि वो जल्दी खत्म हो जाएगी। Basically, the Supreme Court commented that instead of challenging the whole act, there are the 3-4 provisions which are being stayed, though they are being extremely important, and to somehow it is a bit of disappointment. But anyway, these are not the final orders. The Honorable Apex Court, they have stayed the main provisions 2R, 3C. So, ma'am, in common language, in layman language, what are those provisions those have been stayed? So basically, the stay is on that the government cannot create any third-party interest. They have until or unless the title is being cleared on the waqf property. So earlier, the collector had the right to just to take the property, the alleged waqf property, in its possession, and then the government revenue records they need to verify. And then accordingly, because the possession was earlier been taken by the government. So now the Honorable Apex Court had clearly put a stay on it, and they have clearly mentioned that until or unless the title is not made clear, it will be stayed. Then another important point is that the 5-year clause, the Amendment Act, yes, the Amendment Act clearly said just to put a check on the conversions and then the forced transfer of the properties to the waqf. So they have directed the states to frame a policy that the states, after framing the policy, they will first check whether the individual has genuinely been converted to Islam and has been practicing Islam for 5 years. So once it's been confirmed, then only they'll be able to create the waqf. Ma'am, what about the power given to the DM for inquiring the disputed matters? So that has been completely been stayed, you see. So any specific comment on this provision? So the specific comment is that earlier clearly the title is to be established first. So the power of the collectors, the court has put a clear stay on it. Earlier the collector had a clear right that they can just take the possession of the property, whatever the dispute it is. So that is a clear stay on it, and until or unless till the High Court the title is being cleared, no third party interest will be created. And ma'am, what about the composition of council and board, ma'am? So the composition of they had put a restriction on maximum 4 non-Muslim members. So, and for the state it is 3, and the CEO can be a non-Muslim. So there is and there is a stay that they cannot increase that.